So, Assalamualaikum everyone. Today we are hosting our first session, Tech Talk Season 1. And since we are in March, so our first episode is basically Women in Tech. And we have three lovely guests with us, Azima Dhanji, Dr. Samina Shahzaman, and Zainab Hamid. So welcome to this, our first Tech Talk session, Women in Tech. ठीक है. So चलते हैं हमारे जो तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं इनका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कौन है क्यों वुमेन इन टेक के सेशन में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है so लेट्स गो टू डॉक्टर समीना शाहजमान इन्होंने पीएचडी किया हुआ है सर्फेस साइंस में सर्फेस साइंस जितना मुझे पता है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिटेल में समीना हमें एक्सप्लेन करेंगी बाद में द डिग्री शी हैज़ डन इट फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना. And then after that, she basically worked as an assistant professor with ComSci. उसके बाद वो प्रोग्राम डायरेक्टर भी रही हैं इंटीग्रेटेड साइंसेज एंड मैथमेटिक्स की हबीब यूनिवर्सिटी पे बट नाउ शी इज़ वर्किंग एज एन एसोसिएट प्रोफेसर विद हबीब यूनिवर्सिटी. उन्होंने अपनी 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं मटेरियल सिंथेसिस लैब में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर. हम चलते हैं अब जैनब की तरफ. So Zainab, you know, I know her for quite a long time. Corporate world से इनका ताल्लुक रहा है और उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लेते हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड को खैरबाद कहा एंड देन शी जॉइन बेसिकली एडटेक. उसमें अपना एक स्टार्टअप रन कर रही हैं. शी हैज़ बिन आईटी लीडर फॉर 25 years and 25 years का आईटी एक्सपीरियंस है उनका. She has been, you know, certified IT governance professional. She is also an IS auditor. Project management पे का भी professional experience रखती हैं. और शी इज़ एन एनम ऑफ फास्ट एंड IBA कराची. उसके अलावा बेसिकली जो सबसे अच्छी बात है और रिसेंटली मैं इनसे मिली भी हूँ एक सेशन के अंदर शी इज़ द प्रेसिडेंट विमेन इन साइबर सिक्योरिटी Pakistan affiliate, which is basically, proud for our women fraternity to have women like this in cyber security area. जो कि कंसिडर किया जाता है कि इट्स नॉट अ women जॉब. बहुत कम खवातीन है पूरी आप कह सकते हैं दुनिया के अंदर सिर्फ 20% खवातीन हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर काम करती हैं. शी इज़ ऑल्सो बेसिकली a board member of ISACA as on the Karachi chapter. Isaka. Isaka. She's also basically a member of ISACA on the Karachi chapter, and she's a IT governance chair on She Leads Tech as well. So Zainab, thank you for joining us. Now let's go to our third participant. She's Azima Dhanji. And I got to meet her first time in an event where I saw how basically one thing that really impressed me about Azima. उन्होंने एक सेंटेंस मुझे कहा था उस सेशन के अंदर वो मेरे दिमाग में फंस गया था कि जो इनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है मदर टंग इन्होंने कहा कि मेरी मदर टंग तो साइन लैंग्वेज है and that struck in my heart because her mother basically can only understand sign language. So that's how she stated that sentence. Azima ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं बहुत सारी रिकग्निशन है इनके प्रोफाइल के ऊपर शी हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर हर एफर्ट्स इन फोर्ब्स पायनियर्स पोस्ट and other publications as well. Startup के लिए पाशा ICT अवार्ड विन किया और 18th Aspector अवार्ड भी basically इनके प्रोफाइल पर है. Different national and international forums के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को represent किया है for her basically the area of expertise. She is completely committed and I can see her commitment honestly by using technology as an enabler to address and design issues or facilitate the people who are basically differently abled to be part of our society. And she's been continuously contributing in that area. उनके startup का नाम Connect Here है. It's a social startup
which basically works for the sign language and its accessibility for the deaf inclusion in Pakistan. By using the help or taking help of technology. So thank you all three participants for joining Women in Tech, episode 1, Tech Talk with JBS. तो सो आप सबसे बेसिकली मेरा एक कॉमन सवाल है ऑब्वियसली मेरे पास खुद तो इस सवाल का जवाब है कि मैं क्यों आई थी इस एरिया में बट आई रियली वांटेड टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि what exactly basically interest you or pushed you to work in the field of STEM. So I would request first Samina if she can give us, bit of an information that क्या वजह थी कि वो इस फील्ड में आ गई स्टेम की फील्ड में या टेक्नोलॉजी की साइड में जी समीना Thank you, Rabia, for introduction and for invitation in this great event. So, as I define myself as a very curious soul, मुझे सवाल करने का बहुत शौक था. मैं हर चीज के बारे में, if I remember back in my childhood, I used to ask why sky is blue. And I would have questions like, why, if this earth is really round, why don't we fall at some point? Like, if you are on the ball, then why doesn't it happen? And those questions stayed with me for very long. And I would get answers from my friends, जो अपनी इस्तात से जो जवाब दे सकते हैं वो देते थे. But then I was sitting in my 9th standard. I remember it was physics class. And when I got the scientific answer of that explanation, that why it is blue and why it turns red, so it just struck me so hard that I was like कि यही field है जिसको जो मेरे सवालों को जवाब दे सकती है. So if I just fast forward to my bachelor's, I found one instructor who was very dedicated. हम जैसे books में पढ़ते हैं तो it is a two-dimensional depiction of any diagram. Lekin he made a connection from this two-dimensional to a three-dimensional world. And I could see that. And it was so fascinating and inspiring that I thought, okay, I want to be someone like that. And when I stepped in my master's in Qaidazam University, it was a completely new world because our instructors, जो professors थे, वो आपसे बहुत सारे सवाल करते थे और फिर कहते थे, अच्छा अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर यूं होता तो क्या होता, फिर आंसर यही आता, फिर ये यूं होता, अच्छा ऐसे हो तो क्या हो. All those questions, that critical thinking, that just sparked my interest, my curiosity more. Then I thought that I eventually want to land in this field. So that's how basically आपको ये discovery is like very later stage of your academics or yeah the curiosity was always there since the beginning in your school as well. Curiosity अपनी जगह थी लेकिन STEM में आने का फैसला it was later in life. Okay. It was at master's MPhil level that I thought that I would be an academic with my interest in science. लेकिन उससे पहले ये था कि सब और एक और चीज भी है कि I work different people work with by different means. I work through the process of elimination. So I know what I don't want to do. So I didn't exactly what I wanted to do. So on my way forward, I discovered कि ये चीज तो मुझे इतनी appeal नहीं कर रही, so just put it down. So there are these 2-3 fields which are left out for me, and I'm gonna pick them. Right. And so, academia was closest to my heart because I thought that back in the days, I always thought that I am good at explaining things. And the passion is there because I want the things to be cleared for me first before I can explain it to others. So that was my short story. Good. So, Ji Zainab, आप बताइए. So, Assalamualaikum everyone. Thank you for the invite. And it's such an interesting question. It takes you back years. So thank you for asking that and reminding me of one of my favorite teachers in school. So अभी आपने पूछा स्कूल से, so whoever went to St. Joseph's Convent in Karachi,
and has done the O level piece knows Miss Swaras. And she was a maths teacher for years and years, and she kind of inculcated the love for maths in us. अच्छा वो मैथ्स भी था, वो तेजी से सवाल करना भी था, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी था, and it would just made so much fun. ठीक है, so for me enjoying anything is more important than doing the thing. इसका रिजल्ट तो आता ही है, मगर you have to enjoy that. तो आई थिंक उस टाइम से वो मैथ्स का शौक हो गया, फिर मैथ्स के साथ जब फिजिक्स बिल्डअप हुआ, फिजिक्स का शौक होना शुरू हो गया. एंड देन आई थिंक like Samina said, she was curious. I was always a problem solver. I wanted to find solutions for everything. So वो आहिस्ते आहिस्ते करके वो ना हमेशा एक अचीवमेंट फील होती थी कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एंड द फर्स्ट वन टू सॉल्व इट. वो बिल्डअप होता गया शौक. And then I think one of the best things that happened to me was I didn't get admission into BBA program. And that I think that is the best thing that has happened. I know a lot of kids who are trying for BBA will think कि ये किस किस्म की बात है, but I did not get admission to BBA at that time. FAST was just too new to go to, yeah. But that was the only option. But Rabi, I can't tell you how fortunate I was to go to that university, because that's where my problem solving skills got refined. Then I understood कि टेक्नोलॉजी से कितना कुछ सॉल्व हो सकता है. मतलब how empowering that is if you can use it the right way. Then one way or the other, my career took me into a path where I started using technology to find solutions. So when you mentioned I was in corporate में भी मैंने बहुत ज़्यादा आपको समझे कि business analyst, translator का solution provider का role play किया rather than hardcore technologists. So right. Also like we've done solutions for across Pakistan. ईमान का नाम आपने शायद सुना होगा, जब हमने उसके लिए अवार्ड्स लिए थे. एक मिल्क कलेक्शन नेटवर्क सॉल्यूशन था वो. बेसिकली it wasn't just a system, it was a solution, full solution. Then उसके बाद जब मैं आपने कहा कि कॉर्पोरेट पे इस पॉइंट पे आ गई कि वो लगा कि इससे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व ढूंढना चाहिए सॉल्व करने का, तो फिर मैंने कहा कि चलो अब लिटरेसी उठाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. और टेक्नोलॉजी में इतना पावर है, वी जस्ट हैव टू स्टेम की फील्ड में टेक्नोलॉजी में आप कहें, मैं टेक्नोलॉजी से हूँ स्टेम की, तो मैं शायद टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझती हूँ, पर उसमें इतना empowering है कि it's helping us solve that problem also. So I'm kind of like a STEM person because I like to solve problems, and STEM fields help me solve those problems. So it's keeping me going. And then अब तो वो वाला स्टेज आ गया है कि अब जैसे इस सेशन में है वैसे अब ना वो women in STEM कम है, तो that keeps me going also. So there are 3 things that I keep doing on simultaneously, is running that platform literacy ka, and then making sure that there's enough motivation for women in STEM. And also I think there is so much value businesses can create through STEM. So I advise businesses, I consult with them, because STEM is something that helps us all solve a lot of problems. So that's where the journey is, and I think it's going to keep going on. The love for STEM keeps going on for me. Yeah, lovely. Zainab, because देखिए इस बात से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेने की, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं हमारे मुल्क के अंदर, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी हैज़ टू बिकम एन एनेबलर, be it a scientific resolution of that problem, या वो टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली एग्जिस्ट करती है उसको हम यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. एंड सर्टेनली वो एक डायरेक्शन क्लियर है, और वही कंट्रीज प्रोग्रेस करती हैं जो कि अब इस मेंटल बैरियर को सरपास कर चुकी हैं कि टेक्नोलॉजी को उन्हें एज ए एनेबलर जब तक वो यूज़ नहीं करेंगी तब तक उनकी स्केल नहीं हो सकेगी ग्रोथ. सर्टेनली जो इसको जितना जल्दी रियलाइज कर ले उतना बेनिफिशियल है. और अच्छी बात यह है कि देखिए इसकी एक क्लियर एग्जांपल अजीमा की सूरत में हमारे पास मौजूद है. So she's basically trying to address a social issue with a technology enablement. So I'll go to Azima. Azima, आप बताइए कि what made you come towards this field? Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for inviting me. I feel honored. I feel I'm not going to be speaking today. Itna zyada jitna zyada I'm going to learn from your experiences. So truly honored for that. I think my journey in tech field has been very accidental.
I didn't assume that I'm gonna be working in this field, but it was the need of the problem that I was solving that brought me into this field, and that showed me the power technology has to, enable and to serve persons with disability. So, like Mem Rabia really nicely told my story, I come from a deaf family, and I've been raised in a community where I saw that people with disabilities are marginalized just because they have certain kind of limitation. And talking about the deaf community itself, the only difference that exists is the communication difference, that they use sign language and we use verbal language to communicate. And once I got into this university ke andar, I just spent my first year at IBA. Uske baad I was like, someone needs to come up and use technology to solve this problem. And then I realized that if no one else is doing it, that doesn't mean that I shouldn't take that step or come up with a solution for it. And once we started, we started very small, just with the idea of using the tech that's available for free, social media, to create awareness. But then once a deaf person who was based in Gujranwala, he got connected to us through Facebook, and he was like कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे लिए इंटरप्रेट कर दें. And I was like, I'm based in Karachi, you're all the way in Gujranwala, I can't come all the way just for an hour long conversation hardly. And he said, नहीं, मैं आपको सिर्फ WhatsApp पे वीडियो कॉल करूंगा, and whatever I'm signing to you, you verbally tell it to the manager, and whatever the manager is saying, you sign it back to me, and the entire conversation can happen online on phone. And when we did that, I had my skeptics, but like when we tried it out, the first thing that manager said was कि इतनी सी बात है, इसको सिर्फ डेबिट कार्ड चाहिए, बेचारा कब से आ रहा है मेरे पास, I'm not able to understand. And I think that was the point in my life where I realized that this big issue can be solved if we just connect deaf community to people who know sign language and have the communication independence, give them the communication independence within them. And that sort of began the journey of Connect Here towards using technology. And today we have created something that connects a deaf person from their phones, like they all have mobile phones. Ek click the bate and they can get connected to a sign language interpreter. It's available in their pockets. They can now easily go for doctor's appointment. They can go to banks. They can go for interviews. They can have all sorts of communication ease just because technology is there. So I think my journey in it was to understand the power of sustainability and scalability technology brings towards you, the independence it brings in the lives of persons with disability, that kind of motivated me to enter this space and still motivates me to innovate and create new solutions every single day. Yeah, lovely to hear. And Zima, मुझे obviously ये background नहीं पता था, but every time I meet you, I learn more and more about your journey, and which is certainly very impressive and very आप कह सकते हैं कि लोगों को it touches heart of people. So let's go to Samina. अगर आप हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि about your whole journey, and how how you have accomplished different stages of life throughout this journey till to date. Okay, thank you, Hirabia. So, hailing from a middle class family, I was raised in Middle East. After my high school, we shifted to Islamabad, and there I completed my bachelor's. During my bachelor's, I used to go for tuition. So my day was jam-packed. I used to go at 7 to the college, back by 3:30. 4 o'clock, I had to head out for a tuition, because that is what was the norm back in the days. So, but this tuition center was a little different. There was just one guy, this particular gentleman, who offered classes in physics, and he would do it for the fun of it. So, उनकी क्लास में जाते थे, 1 घंटे की क्लास होती थी और वहां हम 2 घंटे बैठते थे, और वो पूरे 2 घंटे में सिर्फ एक प्रॉब्लम कराते थे, 2 प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उस एक प्रॉब्लम को हर डायमेंशन से हम देखते थे, हर तरह से उसको काट के उसको डिफरेंट तरह से कि अगर ये हो जाए क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा.
So that would give me a lot of confidence in thinking and critically analyzing problems. Then bachelor's ke baad, I went to Qaid-e-Azam University, stayed there for my master's and then for my MPhil. So MPhil mein jo mera research tha, that was in material science. And then the whole experience of uh, my university life, my first university life was very exciting. The first day I cannot forget. मुझे वो जो बड़े से boards होते थे, triple boards, and then there was this huge classroom with 50, 60 seats. And the professor, the way he used to enter the class, they would pick the chalk and start writing and ask questions. वो चीज इतनी fascinate करती थी कि I can still, breathe that air sometimes, and that gives me goosebumps. फिर उसी दौरान I had interaction with one of the brilliant professors in Pakistan. और मुझे लगा कि मुझे कम से कम PhD बाहर से करनी चाहिए ताकि मुझे ये एहसास हो कि बाहर लोग कैसे काम करते हैं. Then I went to Technical University Vienna. I did my studies in surface physics. जैसे आपने बताया, ये हम chemical और physical properties materials की study करते हैं surface के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी हम nano scale पे करते हैं. जो भी किसी भी चीज की खासियत आपको मैक्रो स्केल पे नजर आती है, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो सोना आपको गोल्डन नजर आता है, लेकिन अगर इसी को छोटा 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 कर दिया जाए तो इसका जो कलर है वो लाल हो जाएगा, या आपको पीला नहीं नजर आएगा, या आपको लाल रंग में नजर आएगा क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है. नैनो स्केल के ऊपर चीजों की जो खासियत है वो बदल जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, और वो एक पूरी दुनिया है जिसको अभी एक्सप्लोर करके हम टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. So that was very fascinating for me. I worked there, then I came back, joined ComSets for 5 years. During that, I went to Turkey for my postdoctorate, Middle Eastern Technical University for 6 months. फिर वापस आके I joined Habib University in 2017. And then I have collaboration for my research in Paul Scherrer Institute and Basel University in Switzerland. तो वहाँ पे मैं अपना जो काम है उसको वहाँ जारी रखा हुआ है. So that's my small journey. तो उससे मुझे एक चीज ख्याल आती है आपसे पूछने की कि जैसे आपने मेंशन किया कि वो जो आपका जो ट्यूशन वाला जो एरा है उसमें Yes. लॉट ऑफ आई कैन गेज के जी बहुत सारी क्रिटिकल थिंकिंग या बहुत आप कह सकते हैं कि आपके उन टीचर ने आपको बेसिकली उस प्रोसेस से गुजारा जहाँ पे आप एक चीज को सरफेस से हट के जरा डेप्थ में स्टडी करना और उसको गेज करने के लिए आपको ट्रेन किया गया ना, आपके ब्रेन को उन्होंने शेप किया इस तरीके से कि वो फंक्शन कर सके. सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि what how do you think कि अगर जो जो यंग लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं जो कि साइंस या स्टेम एजुकेशन को फॉलो करना चाहती हैं, उनको what is that one ingredient that you will, or probably multiple things that you would like to highlight should be there in their learning path या उनके education period में, so that they can achieve that critical आउटकम जिस तरह आपका करियर है, या वो गेज कर सकें कि दिस इज द डायरेक्शन दे वांट टू टेक. सो वो अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग जिसको आपने अपना इंटरमीडिएट का प्रोसेस कह सकती हैं या कॉलेज का टाइम कह सकते हैं, वो क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि दे शुड बेसिकली इनकलकेट इन अमंग देमसेल्फ टू सेट अ डायरेक्शन. बचपन में जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो उनसे पूछा जाता है आप बड़े होके क्या बनोगे, राइट? Instead of asking that, I learned somewhere कि ये पूछने के बजाय आप उनसे ये पूछें कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ है जिसके बारे में वो बहुत पैशनेट है, या कौन सी चीज़ है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. I was doing admissions के इंटरव्यूज कर रही थी मैं बच्चों के, तो I just asked one of the students के बताओ कि कौन सी चीज है which is very close to their heart. They themselves were not even aware of why they wanted to pursue a certain field. जब उनसे ये पूछा गया कि why do you want to apply for, let's say for example CS,
So they said कि because I want to create a repository of gaming in Pakistan. क्योंकि मुझे गेम्स, और फिर जब उनसे पूछा कि आपको क्या चीज बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गेम्स, और मैं सारा दिन गेम्स खेलता हूँ, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो दैट समहाउ इज देयर कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपकी ये लाइन क्लियर हो तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उस फील्ड को चूज करना. So, and it makes very easy for you to excel in the field if you know कि आप किस चीज के बारे में concerned हैं, passionate हैं और sympathetic हैं. And I think question asking जो चीज़ एक मुझे लगती है ना कि हर चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है. बेसिकली अगर हम अपनी एजुकेशन को सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से ही रखेंगे कि यार ये मैंने पढ़ लेना, इसका एग्ज़ाम देना है, यू नो द हम जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, या आप समझें कि जेबीएस जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं अब बिलोंग करती हूँ, उसमें हम एक चीज़ पे बार बार बात करते हैं, और टॉप लीडरशिप इसके ऊपर काफ़ी फोकस करती है, इज द वर्ड वी कॉमनली यूज इज पर्पस. Okay, so what do we want to do and why do we exactly want to do? So जो purpose वाला part है ना, वो हमें अपने बच्चों के अंदर right at the beginning जो है वो embed करना पड़ेगा कि they should know why they want to basically have something, what is the purpose behind it, why they want to basically take that route, what is the objective. तो वो शायद probably जब वो अपने आप से सवाल करना शुरू करेंगे, they will find better answers and then put right questions in front of the people who inspire them. So सो जैनब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये कि चूंकि आप एक बड़ा ही आपके प्रोफाइल में एक बड़ा क्रिटिकल रोल आता है, जो कि प्रेसिडेंट इन है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से. सो उस पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि वो जर्नी आपकी कैसी है. हाउ डिड यू रीच टू दिस पर्टिकुलर डोमेन जिसको हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं, यू नो सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि बहुत कम खवातीन हैं जो इसको एज अ करियर परसू करती हैं. तो राबिया, बेसिकली जर्नी मेरी टेक्नोलॉजी की है, एंड बिकॉज मैंने हमेशा ये समझा है कि एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैलेंज के नया नया प्रॉब्लम ढूंढो, और दूसरा मेरी पर्सनालिटी, जैसे अभी बड़ी अच्छी तरह सरीना ने कहा कि पर्सनालिटी पे बहुत डिपेंड करता है. मैं एक चीज करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, तो मुझे हमेशा एक नई चीज चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए. So वो that kept me going. So over the years, if you see my profile also, मैंने जब मैं when I was doing development, I done my project management. I said चलो अब IS audit को consulting side को explore करो. उस तरह करते करते मेरा पोर्टफोलियो इस तरह का बन गया कि it is now a governance portfolio. ठीक है, जब आप वहां पे आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी का एक डोमेन है जो आपने ऑलरेडी टच कर लिया होता है. एज अ CIO और एन IT head, I've worked as about more than a decade in leading organizations. ठीक है, so if you've done that, you've done security. Yeah. ठीक है, I'm a IS auditor also, I'm an IT governance professional also, and those things you take, as Sarina said, you have to expose yourself to the right networks. You have to step up. You have to say कि ठीक है, अब मैं next ये challenge देती हूँ अपने लिए कुछ challenge ढूंढना पड़ता है. बहुत सारे लोग आपकी तरफ challenge लेकर भी आते हैं, and then you can't shy away. So there were a lot of challenges that came, and I had very good mentors. I have to be very thankful to the mentors that I had, who helped me overcome those challenges. But over the years, as my profile built up, and one fine day I got a call from an ex-colleague from Canada saying, "Hey, Zainab, we have so many women in cybersecurity. Is a global organization. It's a not-for-profit organization which connects women globally and gives an opportunity for women to who are specifically working in cybersecurity. It's a global community. So it's dedicated to foster their passion for cybersecurity. It unites the community. Network hai, mentoring hai, career opportunities hai, scholarships hai." And then he managed to convince me that I should set up an affiliate. I should take the lead on setting up an affiliate in Pakistan. He introduced me to the global. So it's also your network, right? He's sitting there. He knew the global lead. He connected us. He said कि ये करें please, Zainab. कौन करेगा?
And that's what I'm hearing a lot, Rabia. Like, I'm here and I didn't say no because kaun karega. Like you have to you are there and Samina is there and you guys understand that there comes a lot of responsibility with where we are, and we have to be talking about our journeys, and we have to be setting these things up. So this is not the only thing. In 2017, ISACA has launched the She Leads program, which is also a global program, which they have understood that women need uh, focused attention and focused intervention to be able to grow in their career. So it's not like a entry level help intervention. They're helping women grow in the ranks. So at that point, I was part of corporate, and I was helping take that agenda also. So I've been working on the board with ISACA Karachi chapter on this. And Alhamdulillah, right now, if I were to speak, we've been able to, at least kuch nahi, to we've been able to motivate female to explore this as a field. We all go up and sit on that stage just to be able to tell them that yes, it's possible. Women actually think STEM is not possible. It is not a field for us. So that is what we need to tell, and that's what I've always believed, that this is a field for me. I've never had a doubt. एक ये भी चीज है. So, and इसी तरह से the reason for setting the affiliate here for women in cybersecurity to be able to be leading the She Leads Tech program over here is to help them find global avenues, help them find global networks, and also build a local community. And also इससे हमें अब आज सुबह ही मुझे एक कॉल आई है कि आप प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे ये हेल्प कर दें, आई नीड सम मेंटरिंग. So I get a lot of those calls, and I'm kind of like, I don't want to say no, but वही वाली बात है, we need more. So I'm trying to create that stream of women who can help us all raise the women up. You have to pull people up. So that's what the whole motivation is. So it's a very interesting organization. अभी हमें सिर्फ एक साल हुआ है, and right now we've negotiated, and they're also very nice. They understand where we're coming from, a dollar parity. So they've given us a very good discount on membership for 2 years. And I've been encouraging, every conference I'm going to, I'm encouraging women to just join and explore the potential that they can get out of this. Because when you open the global doors, a lot of people open the global doors for me. So when you open the global doors, जैसे समीना बाहर से पढ़कर आई है, इनको पता है एक वो जो विजन आपका ओपन हो जाता है ना, फिर आपको कुछ भी इम्पॉसिबल जनरली नहीं लग रहा होता. यहाँ पे हमारे दिमागों को ना थोड़ा सा बंद कर दिया जाता है. हमें सब कहा जाता है कि नहीं, ये तो मुश्किल होगा, ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, राइट? अजीमा भी हंस रही है इस वक्त. सो आई कैन टेल कि ये भी सुनती होंगी ये सारी बातें. हम उस जर्नी से गुजर के अब हम कहते हैं कुछ मुश्किल नहीं है. So this is the background to that, and this is the motivation for that. So ज़ैनब, मुझे मैं कल परसों एक कॉन्फ्रेंस में थी और उसमें एक साहब कहने लगे कि जी जो है वो हम बात ये नहीं है कि हम ख़वातीन को लेना नहीं चाहते इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, बट जब हम पोजीशंस पोस्ट करते हैं तो हमें रिज्यूमेस ही नहीं आते या कैंडिडेट्स अप्लाई ही नहीं करते स्पेसिफिकली इन द वुमेन फ्रेटर्निटी से. हमें मिलता ही नहीं है वो पूल के जिसको इवैल्यूएट किया जा सके. तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि चूंकि आप एक चैप्टर को लीड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़रूरत मुझे लगता है कि होना चाहिए. एक तरह से वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि आज अगर मैं और आप उठाएं और कहें कि जी पाकिस्तान के अंदर कितनी सीसोस मौजूद हैं ख़वातीन, तो आपको एक भी नहीं मिलेगी. ठीक है? नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड सर सीसोस. मैं आपको बताऊं मसला क्या है. मैं आपका सवाल समझ गई. मैं आपको थोड़ा सा मसला बताती हूँ. 2-3 मसले हैं. मैंने ये 2017 में जब शी लीड्स टेक का इनिशिएटिव लिया तो हमने रिसर्च की लोगों. हमने कहा आखिर मसला क्या है, मतलब हमें किन आपको चीजों को एक्शन पॉइंट्स बनाने की जरूरत है. सही है. 3 पॉइंट बहुत क्लियर निकल कर आए हैं राबिया उस रिसर्च में. बहुत छोटे स्केल पे हमने रिसर्च की थी, मगर उसमें 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर निकल कर आए. एक है रोल मॉडलिंग का. हमें पता ही नहीं है. देखिए, मैं आज तक डिस्कवर कर रही हूँ कि कौन कौन सीनियर खवातीन है, जबकि आई काइंड ऑफ शुड नो नाउ, बट ऐसा नहीं है. अभी मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गई. आई मेट समवन हु इज अ सीनियर फीमेल डूइंग operations for a big telco, and I've never met her. So we don't know. We don't network within ourselves. We don't know. एक सबसे बड़ा मसला ये है, रोल मॉडलिंग नहीं है.
दूसरा मसला ये है कि फीमेल्स को कोई मेंटर करने को तैयार नहीं है. नाउ आई हैव बीन वेरी लकी. I kind of like, because I've been, see, there is no shortcut to hard work. So I've been a very hard worker also. So a lot of mentors would enjoy working with me also, because I would deliver whatever they want and then they would correct my mistakes. So I've been lucky getting those mentors. But a lot of men are not happy to mentor women. So ये भी एक मसला है, and there are not enough women to pull women up, like I'm saying. So why do we stretch right now? We stretch because we want to pull those women. There's going to be there's a timeline required to एक career path से निकाल के लाना है ना. जब मैंने शुरू किया करियर तो हमें 3 नाम पता थे, जहारा और एक दो और, राइट? आपको भी यही नाम पता थे, बिल्कुल राइट? ऐसे. अब हमें कम से कम 15-20 नाम पता है. So it is progress, right? It's not the kind of progress we wanted to have, but it is progress. And inshallah, that the reason for Vices or Sheely's Tech is to have a bigger pool at the top of the pyramid. You know, top of the pyramid बहुत बहुत steep है हमारा भी. और तीसरा मसला ये है कि खवातीन ना दे थोड़ा सा मसला, they think they have to be 100% ready for a role. सही कह And रही then they हो. will do it. ऐसा नहीं होता कभी भी. आदमी कभी भी इस तरह नहीं सोचते. You can't be 100% ready. I've never been 100% ready for a role. I've always stretched myself to say I will learn. Give me the challenge. But I'm not going to stay here and not learn and keep doing this. It's not happening. Yeah. ठीक है? So I've always been in that path. And एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी, mentor तो होता ही है. You need sponsors for women in the boardrooms. You need men, and whoever is in that boardroom, you need to get more women in those boardrooms to sponsor women, or men to sponsor women to grow. And that's also part of the research that we found out. And awareness ही नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी का एक करियर है. अभी मैं एक यूनिवर्सिटी गई थी, मैंने वहां आईटी रिस्क मैनेजमेंट पे एक लेक्चर दिया. एंड में बच्चियां पूछ रही हैं, आईटी रिस्क मैनेजमेंट के रोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? एंड आई वाज लाइक, जी बेटा रोल होते हैं. सो आई एम जस्ट सेइंग कि अवेयरनेस नहीं है. लड़कियों को हम पढ़ाते नहीं है, बताते नहीं है, उनको बाहर कहीं लेकर नहीं जाते, तो कहाँ से बढ़ेगा वो पूल? कहाँ से बढ़ेगा? तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखें मेरे पास भी जब प्रोफाइल्स आते हैं ना, तो ज़ैनब वही एक दो कैटेगरीज में होते हैं कि जी मुझे या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या मुझे कोडर बनना है, या बेसिकली मुझे वेबसाइट डेवलपर बनना है. इससे ज़्यादा का रोल मुझे जो है ना वो आप कह सकते हैं कि पूल आता नहीं है. मैं एक और ऐड करूं, क्यूए बनना है. पता नहीं क्यों सारी लड़कियों को क्यूए बनना है, सही क्योंकि कह वो रही है शायद क्वेश्चन रोल है. जी. अब वो एक मतलब आपने सही कहा शुरू में कि हम एक बॉक्स के अंदर हमने अपने आप को फिट कर लिया है कंफर्ट में, कि ये वो रोल्स हैं जो हम कर सकते हैं. ठीक है. तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में जैसे समीना है, आप हैं, अजीमा है, हमें मिल के बेसिकली स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोफेशंस जो कि लेबल किए जाते हैं कि इसमें लोग खवातीन नहीं है, उनके ऊपर एटलीस्ट आई मीन फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन व्हाट आई कैन कैप्चर इज बेसिकली कि हमें एक कॉन्शियस, जैसे आपने कहा ना, अप्रोच लेनी पड़ेगी, कॉन्शियस स्पॉन्सर्स लेने पड़ेंगे, एंड देन कोचिंग भी करनी पड़ेगी कि हम ऐसे प्रोफेशंस जिसमें खवातीन नहीं है उनके उस पर बात की जाए कंटिन्यूसली, ताकि एंड देन हैंड होल्डिंग की जाए. बिकॉज हमें मेरे ख्याल से हम मेरा आपका ये गोल होना चाहिए कि अगले साल हम कम से कम एक साल के अंदर 1 से 2 सीसोस हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर खवातीन को देख सकें. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. सो अज़ीमा, आपकी तरफ आते हैं. आई वांटेड टू नो, ऑल्दो आपने ब्रीफली अपनी जर्नी बताई और समझ में भी आता है कि वो एक नीड बेसिस थी, एक नीड थी जिसने आपको इस ट्रैक के ऊपर ड्राइव किया. लेकिन अगर आपसे मैं आज कहूँ कि आप हाउ डू यू थिंक दैट वुमेन कैन कम इनटू this tech industry, tech field, to solve different social problems? So what are those steps that you know as a learning of your progress शेयर करना चाहेंगी जो आप खवातीन से या बच्चियों से? जी. Definitely. I think I've just gone through that journey myself. So there are very key learnings that I learned or helped me in my journey, experiments that worked out. Number one was to definitely, reach out.
So once, when we started working for this, solution or coming up with something, I don't belong to a family, a background of technology. I didn't have that in my hand. So I started looking out for people who, like you guys mentioned, are in the tech field and who could mentor me or who could support me or who could introduce me to the world out there. So number one key idea would be to reach out, and I would write like random messages and emails to people who I've never met in my life. So I would look up people online and I would just test out by sending them an email, और बहुत दफा जवाब आ जाता था and it would help me out a lot. Like for example, we talked about women in tech over here, and my first mentor was Jahan in my journey. And Jahan ke bare mein bhi, I have never met her before. I'd never seen her in conferences, but I just looked her up online and I went to her office one day and I asked them to introduce me to Jahan to make that, one meeting. And that kind of brought me to the tech industry and introduced me to partners out there. So number one idea would be to reach out and take the risk of, not getting responses, because 100 email में से 2 भी अगर जवाब आ जाता है, it might help you out a lot. The second thing that helped me out was to make partnerships. So at times we don't realize that there are partners who have been working in the industry for years, who maybe not directly working for your solution, because I worked in a niche, so barely anyone was working for that. But yes, there were people who were working for social causes. There were people who were coming ideas on how to connect, customers to a call center based solution. So ऐसे लोगों को तलाश की who have similar interests, similar work background, who have been in the industry for years, learned from their experiences and collaborated with them wherever it was required. And I think the third thing that helped me in my journey was to take risk. So, creating a technology that hasn't been introduced in Pakistan before, don't know if it will work out or not, but taking that risk of creating it, educating people about it, and then seeing the impact that was created. The first time that we launched our application, it was a soft launch and it had issues. A lot of people told us कि ये ऐसे नहीं करना, इस टेक के अंदर आपने ये चेंज लानी है या इस तरह से आपने इसको बेटर बनाना है. So we learned from that. We didn't wait कि जब टेक्नोलॉजी 100% बेस्ट हो जाएगी तभी हम लॉन्च करेंगे. We just launched it when we thought that it's ready for customers. We learned from those experiences. We made amendments. We're still learning and still making amendments, but we're going with the flow. We're not waiting for that one moment where it's going to be perfect. I don't like, Zainab just mentioned कि औरतें इंतजार करती हैं कि जब मैं 100% किसी रोल के लिए perfect हूँ. None of us is like that. We're learning as we're going. Like even for the tech side, the business side, I learned so much from Connect here as compared to I did from my degree. So definitely it was learning along the way. So these three things, number one, approaching, second, collaborating, and third, taking risk, helped me into creating the difference that I am creating today through technology. Lovely, Azima. Samina, मेरे जहन में आपके लिए एक क्वेश्चन आता है और वो ये कि नॉर्मली आप चूँकि आपका बैकग्राउंड या आपका जो प्रोफेशन है वो आप एकेडमिया से एसोसिएटेड है. सो उसमें हाउ डू यू सी जेंडर इंक्लूसिविटी यहाँ पर क्या प्रोपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर हम आपके ही एरिया में देखें तो पीएचडीज हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है. सो यू स्टिल थिंक कि देयर मेंटल बैरियर टुवर्ड्स द इंक्लूसिविटी या खुद ही खवातीन आगे नहीं आती हैं इस लेवल तक. Thank you, Rabia. But before I get into answering that question, I would like to take a moment to appreciate this journey from Zainab to Azima. This is very inspirational and impressive. I really am glad to be part of this whole process. So back to your question about gender inclusivity. STEM में ख़वातीन हैं, मतलब not in a way कि engineering में बहुत कम होती हैं. So in Habib University, we don't have any female faculty in engineering department. I think CS में भी बहुत कम है.
जो हमारा department है integrated sciences and mathematics, we have outnumbered male faculty members, probably because we are from physics, mathematics, and Okay. biology. So biology and environmental sciences, so we can say that. But that is very unstable. So from time to time, this number gets a little up and down. We encourage, but again, we don't find that many females who are motivated to work in this domain. जैसे I mentioned किया, we are highly critical about ourselves. And we think that we need to be perfect before we step in anywhere. And maybe that is one of the reasons that limits us. But there are a number of other issues which are relevant to this problem. Um, back in the days, we would only hear, now I'm very glad that we have issues that women are not in a particular scientific domain, like वो इसमें एक में नहीं, cyber security में नहीं है, दूसरी और field में नहीं है. But there is still a common perception that if you're a girl, you can either be a teacher or you can be a doctor. So that is predominantly still ruling our masses. तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को इजाजत देते हैं कि आप स्टेम की फील्ड में आ सकें. Right. और वो भी उसमें भी लिमिटेड होते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में चले जाओ. फिर उसमें भी ये होता है कि यू जस्ट कैन गो अप टू मास्टर्स, दैट्स इट, दैट्स लिमिट. फिर आपको कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती. एंड एज ज़ैनब एंड अजीमा मेंशन कि हमें रोल मॉडल्स नहीं नजर आते, हमें किसी भी तरह की सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती. द पीपल, यहाँ पे मुझे एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है. इन माय ड्यूरिंग माय पीएचडी इन वियना, हमारी एक सुपरवाइजर थी जो कि वियनीज थी. उन्होंने हमारे ग्रुप से पढ़ा था. वो फिर अमेरिका चली गई पीएचडी करने, 20 साल वहीं पे रही. शी बिकेम अ फुल प्रोफेसर, वापस आई एंड देन शी टुक ओवर द होल ग्रुप. तो वो हमारी सुपरवाइजर बन गई थी. She said to me once, we were having a conversation like this, women in technology and science. So she said कि यूरोप में आपने अगर एक पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करना है, तो उसी पोस्ट पे अगर एक आदमी काम करता है तो आपको ट्वाइस एज मच एफर्ट देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कि आप इस पोजीशन पे हो. So you That's have true. to do twice as much Yeah. work. और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में you can imagine it would be many folds, because first of all you're a female, why are you out? Okay, there are religious issues, there are social issues, there are cultural issues, there are so many other constraints. Why do you want to do this? Stay back, have a relaxed life. So those things do play a very critical role when we see these things. But again, I would like to highlight one point here, that in order to change any kind of society, if we want to progress, by progress, I don't mean that we are just copy pasting Western norms in our society. By that, I mean that we progress mentally, physically, intellectually, spiritually. In all those domains, we need women. We need women. We need really women who can provide visions and values and define things for us. हमारी सोसाइटी का जो एक ओवरऑल मेस बना हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि we have failed to empower our women, and by empowering, people get scared कि that means that you won't get cooked food or you won't get a clean house. Yeah. This is such a misunderstanding which needs to be corrected, because this is such an important thing in which we need to invest. If not today, tomorrow we will have to. We'll Yeah. be left with no choice. And I'm really glad that we have people like that who can set examples and role models out there for people to follow. So Zamina, आपने rightly point out किया, because when I it's long old story, but when I also basically tried to opt as direction for my studies, so I was told by my parents कि आपने जो है अगर प्रोफेशनल कॉलेज में जाना है तो आप मेडिसिन कर सकती हैं. And I was not a medical person at all. I was not cut for that
आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर जिसमें मैं, ठीक है, एज अ प्रोफेशन डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन, Exactly. but they were okay to let me go for a professional college which is a co-education, because back in that time co-education for most of the families was basically a mental barrier, no go area hota tha. तो वो कहते थे कि हम इस पे सेटल करने के लिए तैयार हैं ओनली इफ यू आर रेडी टू बेसिकली गो फॉर मेडिसिन, बिकॉज दैट्स अ नोबल प्रोफेशन, उसमें औरत का लड़कों के साथ पढ़ना इट्स ओके, बट engineering के लिए it's not okay. ठीक है, so I really had to basically struggle to convince my parents, and finally I convinced them, और फिर मैंने electronics में engineering की, but that's true, ये आज भी जो है वो ऐसा ही है, क्योंकि देखिए उसमें होता ये बड़ा टिपिकल सा हमारा वो है, ऑल्दो चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, इसलिए हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए, बट आज भी जो है वो जब लोग शादियां करने निकलते हैं तो उनको डॉक्टर बहू चाहिए होती है, बट दे डोंट लेट देम वर्क एज अ डॉक्टर, यू नो, एज अ, उनको जॉब करना पसंद नहीं है, बट जो डॉटर इन लॉ चाहिए वो डॉक्टर चाहिए। तो ये थोड़े से हमारे बायसेस हैं सोसाइटी के, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक gradually we are on the right path. It's just that जैसे जैनब ने भी कहा, आपने भी कहा कि we need more role models, we need more of such conversations, जिसको जिस पे कॉमनली यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर या कॉलेज लेवल के ऊपर जाके बच्चियों से बात कर सकें, और वो मेंटल बैरियर्स जो है ना उनको दूर कर सकें, ताकि वो अपने लिए इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें. वी सर्टेनली नीड in STEM the 50% of that perspective into every because science is all what how we conduct our lives. It's based on that. We need that perspective of the 50% of the representation of our population in every problem solving प्रोसेस. तो सर्टेनली उसके बगैर हमारे लिए मुश्किल है. एक चीज जो मेरे जहन में आपके लिए सवाल आता है वो ये, और वो फिर मैं जैनब से भी उसी से कनेक्ट करूंगी, कि हमारे यहाँ मैथ्स एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और सर्टेनली हमारे पास मैथमेटिशियंस बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर. आपने सरफेस साइंस किया है, बट सर्टेनली उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रोल है, बट फिजिक्स कहीं ना कहीं जाके मैथ्स से अर्ली एजुकेशन में आपका फाउंडेशन जरूर ले करता है. तो आपको लगता है कि हमें उस तरह का मैथ्स भी सेपरेटली पढ़ाने की जरूरत है स्टेम में, जो जैसे क्यूमॉन का अगर आपने नाम सुना हो, वो एक स्पेसिफिक तरीके से बच्चों के ब्रेन्स को फंक्शन करना सिखाता है एज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स मैथ्स के लिए. तो क्या उस तरह की टीचिंग स्किल हमारे पास आज तो नहीं है, लेकिन क्या वो करने की ज़रूरत है स्टेम में मोर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए? क्या मैथ्स इज समथिंग विच वी नीड टू रियली फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ critical thinking, in terms of problem solving techniques? राबिया, मैंने ह्यूमन फिलॉसफी है ये. It's a tool. It's a teaching methodology of maths के specifically आपको पढ़ाने का जो तरीका है, delivery mechanism है कि किस तरह से पढ़ाया जाए, critical thinking कैसे की जाए, अगर आप उसको उस तरह से समझ लीजिए. सही. मैंने एक्सप्लिसिटली इसका नाम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुना, लेकिन जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. जिस तरह से मैथ हमें पढ़ाई जाती है हमारे स्कूलों में या हमारे कॉलेजेस में, वो बहुत नाकिस है. उसमें आपको सिर्फ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, और आपने उन्हीं को वैसे ही छाप देना होता है. वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है. स्पेशली जब आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ्स में जाना है, तो ये आपके जहनों को वो कर देता है. मतलब इस तरह से वो जो आपके क्रिटिकल माइंड का जो पार्ट है ना, वो आपका बिल्कुल काम करना बंद कर देता है.
और फिर आप उसी माइंडसेट के साथ आप जिंदगी में और काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो चीज़ है ही नहीं, जो डेवलप ही नहीं हुई, उसको आप फिर कैसे उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? सो So, इसका मतलब आप स्कूल लेवल से ही क्रिटिकल जो आपकी जो मैथ्स की एनालिटिकल हम कहते हैं ना कि जो स्किल है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, तभी जाके आप एक बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ज़ैनब, आप चूँकि आपका वन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी के अलावा आपकी एक साइड है एडटेक की, सो टेल अस समथिंग अबाउट that area, that how are you contributing, or how that startup of yours is contributing to solve a problem which is related to the education continuity or education in these critical times जो हमने last 2 years के अंदर देखे. आप म्यूट हैं ज़ैनब? सॉरी, यस आई वाज म्यूट. सो बेसिकली एडटेक का नाम है हमारा टी स्क्वायर, और हमने मैं और मेरी पार्टनर दोनों कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं, और when we I'm going to say when we decided to hang our boots, let me put it like that. So when we decided to hang our boots, we said कि we have skills that this country has given us, let's give back. And give back में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एजुकेशन का. सबसे क्रिटिकल जो लॉन्ग टर्म चीज हमें चाहिए वो एजुकेशन चाहिए. अच्छा, अब एजुकेशन को भी नैरो डाउन करते करते आप मुझसे बेहतर समझती हैं इस मुल्क के एजुकेशन के प्रॉब्लम्स. हमने कहा हम अपनी अपनी बसात के मुताबिक अपनी पैर फैलाएं और उतना उतना काम शुरू करें जितना हम एक 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 पॉइंट तक ले जा सकें बेसिकली. तो हमने लिटरेसी पे फोकस किया. आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस, आफ्टर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, 6 months we were talking and we were understanding the problem, because we are not education का हमारा फोटे नहीं है, हम टेक्नोलॉजी और लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंगेजमेंट के लोग हैं. सो हमने कहा कि हम लिटरेसी पे फोकस करते हैं. जब फोकस आ गया तो हमने कहा हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं. उस प्रोडक्ट का नाम है 3 तालीम, विच गिव्स अफोर्डेबल, इंक्लूसिव एंड एम्पावरिंग एजुकेशन. एम्पावरिंग कैसे? कि आप खुद अपने आप से पढ़ सकें, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकें. इंक्लूसिव कैसे? कि कोई भी पढ़ सके, किसी भी एज का बच्चा हो जो स्कूल नहीं गया, या वो खातून जो अनपढ़ है, जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी और ना आपको उसकी कोई उम्मीद है, और फिर डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनको स्कूल बिठाता ही नहीं है. सो Right. सो एक तरह से मैं अजीमा की बात को बिल्कुल रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में देख रही हूँ कि आप उनकी जिंदगियों को कितना इम्पैक्ट कर सकते हैं जस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी. बिकॉज एक टीचर तो इरिटेट हो जाता है ना किसी को 2 दफा एक बात बताते रहे. टेक्नोलॉजी इरिटेट नहीं होती. टेक्नोलॉजी से आप 10 दफा वही बात पूछ लें, वो आपको बताती रहेगी. ठीक है. फिर हमने कहा हमारा ऑब्जेक्टिव ये, और हमने इसको सिंपल नहीं रखा अपने लिए ऑब्जेक्टिव को, हमने अपनी प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स रखा, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन क्राइसिस कॉम्प्लेक्स है. हम इसको एजुकेशन इमरजेंसी कहते हैं, आप भी इसको एजुकेशन इमरजेंसी ही कह रहे हैं, क्योंकि ये है ही इमरजेंसी. अगर हमने आज इसको शुरू नहीं किया, और ये स्लो प्रोसेस है, मगर अगर आज शुरू नहीं किया तो हम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. Right. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एजुकेशन रेवोल्यूशन को इग्नाइट करें पाकिस्तान में, ताकि जो भी स्कूल नहीं जा सक रहा, उसकी एज आगे चली गई है या उसका कोई भी रीजन है स्कूल ना जाने का, उसके पास एक तरीका हो एटलीस्ट लिटरेट होने का, 0 to 2 तक पढ़ने का. और हमें ये समझ आया है कि टेक्नोलॉजी से हम उस जर्नी को सेल्फ पेस बना सकते हैं, उसकी लोकेशन पे ले जा सकते हैं. जो इस वक्त मसला है कि लड़कियां स्कूल नहीं आ सकती, हम स्कूल को उनके घर के करीब ले जा सकते हैं. सही. उनके घर के करीब वो लर्निंग करते हैं, वो अपने घर में बैठ के कोहॉर्ट्स बना के लर्निंग कर रहे हैं इस वक्त. तो सो देखिए, मैं आपको कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है. Right. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, हमने ऑफलाइन बनाया सोल्यूशन. स्केलिंग प्रॉब्लम है, हमने इसको एलएमएस से इंटीग्रेट किया और मॉनिटरिंग करी. इसमें टेक्नोलॉजी महंगी है, हमने अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी पे इसको बनाया. हमने कहा कि लैंग्वेजेस बहुत हैं पाकिस्तान में, हम इसका आर्किटेक्चर ऐसा बनाया कि हम इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ले जा सकते हैं. अभी हम उर्दू में हैं, मगर हमने इसका आर्किटेक्चर इस तरह बना दिया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में हम ले जा सकते हैं. उसके अलावा टीचर क्वालिटी का प्रॉब्लम है, तो हमने कहा कि अच्छे टीचर्स लो, उसको डिजिटाइज कर दो. जैसे अजीमा ने कहा ना कि हम एक कन्वर्जन करें और उसको सब जगह ले जा सके, तो हमने अच्छे टीचर्स लिए, उस करिकुलम को स्ट्रक्चर किया, उस करिकुलम को डिजिटाइज किया, सेल्फ लर्निंग पे ले आए. एंड वी आर होपिंग दैट दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी थिंक दिस इकोनॉमी विल लिफ्ट. सो बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म है, 3 तालीम का प्लेटफॉर्म, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब लोग इनरोल्ड हैं इस पे, और इंशाल्लाह इस साल में हम इसको हजारों पे ले जाना चाहते हैं.
और हमें पूरी उम्मीद है पायलट के आउटकम्स हमारे बहुत अच्छे हैं। हम इस वक्त 2 MOUs बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन कर चुके हैं, एक और इंशाल्लाह हम इस महीने करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि what our tagline is, we're leveraging technology to give everyone a better chance at tomorrow, because that is what we need to give them an opportunity to tomorrow. इस वक्त पाकिस्तान के लोग डिप्रेस्ड इसलिए कि उनको अपने लिए अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती, उनको चांस ही नजर नहीं आ रहा। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो पढ़ना नहीं आता। उसके अलावा राबिया एक चीज जो जरा सा दिल दहलाने वाली भी होती है और जरा सा गूज़बम्पी भी है कि मैं फार्मास्यूटिकल में भी काम कर चुकी हूँ, और मैं ऐसी स्टोरीज भी सुन चुकी हूँ कि जब माओ ने बच्चों को दवाई दी और बच्चे एक्सपायर हो गए। अब ये ऐसी गूज़बम्पी स्टोरी है कि आप सोचते हैं ऐसे कैसे हुआ? तो ना माँ का कसूर, ना दवाई का कसूर, उस माँ की अनपढ़ होने का चैलेंज कि वो दवाई की एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ सकी। सो आप मैं ये स्टोरी जरूर अपने आप से हफ्ते में एक दफा जरूर रिपीट करती हूँ, बिकॉज दिस कीप्स मी गोइंग, दिस कीप्स मी टेलिंग मी कि ये सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग पढ़ लिख नहीं सकते, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये तो उल्टा केस है ना, ये तो नेगेटिव उसमें जा रहे हैं हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को। सो वी हैव टू डू दिस एंड इट हैज टू बी डन। हम भी जैसे अजीमा कह रही है, हम खुद से नहीं करें, हमने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, वो अपनी जगह देते हैं, हम उनको लर्निंग किट्स प्रोवाइड करते हैं। उन लर्निंग किट्स पे 9 से 10 महीने में वो 0 to 2 पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेटेड करिकुलम है, एंगेजिंग करिकुलम है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग आउटकम हम मेजर कर रहे हैं सारा, और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हमारा 2 कोहॉर्ट्स ने फर्स्ट टर्म खत्म कर लिया है और वो सेकंड टर्म में चले गए। और जहां नया शुरू होता है वहां से हमें ये आता है कि बच्चे घर नहीं जाना चाहते, वो खेलना चाहते हैं, और तो उनको लग रहा है वो खेल रहे हैं मगर वो पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमने हर चीज को ना एक जैसे हमने कहा ना, मैथ्स को एक बोरिंग तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया है। और दूसरा जो इस वक्त हमें जरूरत है ना, वो ये है कि ये बच्चे एक उस लेवल पे आ जाए कि ये जितनी इंग्लिश में उर्दू में रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो यूज कर सके। इस वक्त तो वही वाली बात है ना, एक्सपायर्ड दवाई देने वाली बात है। ये बच्चे वो सारे रिसोर्सेज यूज ही नहीं कर सकते, तो हम इंटरनेट बढ़ा देंगे, हम फाइनेंशियली इंक्लूड कर देंगे, मगर जब वो पढ़ नहीं सकेंगे तो उस फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या फायदा होगा? सही बात है। There will be a lot of things based on this youth who can't read and write. So that is probably, maybe in our lifetimes, I don't know how much we will be able to achieve, but the vision is big. At least 2.5 crore बच्चा, inshallah. नहीं, डेफिनेटली वी हैव टू वर्क टुगेदर। हमारा एक ये जॉइंट आप कह सकते हैं कमिटमेंट इज पाक्ड। इंशाल्लाह लेट्स एक्सपेंड इट। हमने इस पे बात करनी है डेफिनेटली आपके साथ। इसको हम किस तरीके से डिफिकल्ट एरियाज में इसका एक्सेस लेके जा सकते हैं टू ब्रिंग यू नो लिटरेसी टू नियरेस्ट पॉइंट। I'll just add here, that's what we're not doing, because we know that there are a lot of people who are working on this. They just don't know how to train those teachers, how to extend it and how to scale it. So that's where we're helping, and we're doing extensive monitoring. So it's going to inshallah go to all parts with all the help, with everyone doing it. Inshallah. So I wanted to basically ask one last question to all three participants. Normally conversations खत्म इस पे होती हैं कि हम पूछते हैं कि जी what advice you would like to give to to women or girls कि वो इसका STEM को या टेक्नोलॉजी को ले सकें. I want to put a question in a different way. आप ये भी ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर बताइए जो आप कहना चाहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए. You know, that's something, just plug it in a way that you can coach people, that we can at least अपनी checklist के अंदर मैं वो एक चीज़ डाल सकूं या बता सकूं उन बच्चियों को जो कि STEM की फील्ड में आना चाहती हैं कि this is one thing that you must avoid doing it, so that you stick to your goal, you stick to your path, and you don't basically कहीं बीच में रुक ना जाए सफर आपका. सो बताइए. आई कैन स्टार्ट विद समीना. Okay, so this is a very interesting question. It's out of paper. मैंने पेपर में नहीं था. सरप्राइज क्विज है ये. सरप्राइज क्वेश्चन. इसमें सरप्राइज आंसर होगा. एक जो मैं आपको दे सकती हूँ, और ये हर लड़की अपने लिए खुद डिसाइड करेगी कि वो उसके लिए क्या चीज़ मोस्ट फिजिबल है. एक तो ये कि आप ये सुनना छोड़ दें कि आपको लोग क्या कहते हैं. यानी आपके
parents, I mean, respect, of course, you respect your parents. And I'll tell you my short version story कि बाद में लोग कैसे बदल जाते हैं. आप वो ना करें जो लोग आपको कहते हैं कि आप करें. आप वो करें जिसके लिए आप कन्विंस्ड हैं कि आप कर सकती हैं. Back in the days, my only option was go into teaching या फिर medicine. I resisted medicine like you resist as much as possible. कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं बन ही नहीं सकती. I just don't have those DNA cells inside me कि मैं वो काट सकूं, मैं वो चीजें सी सकूं. I can't sew a piece of cloth. तो मैं इंसान को कैसे कर सकती. And it is such an injustice to the person with whom I will be working with. So up now I am here. I had been in teaching for a decade now, and my parents are completely proud of it, and they are not any more skeptic, and they have confidence in me that you can do whatever you want to. So the thing is that you have to prove yourself कि आप जो कह रही हैं वो आपके वो होता है ना, आपने demonstrate किया हो कि हाँ आप ऐसा you can take an undertaking which you say. ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are very untrustworthy kind of a person and you just say things just by the way, and then you do, and then you back off, and then you do several things. So that will not create an aura for parents to trust in you. So first thing, don't do what people want you to do what you have faith in. So that is my word of आपका version क्या है? Did you ask me? Yes, Azima. Okay, perfect. So I think it's a very interesting question. No one has asked me from a different lens, but I think there are a few pointers in my head. Teen cheeses majorly. The first thing is please don't get scared of being embarrassed for things not working out. So please be open with the idea of failing, of learning while you're failing. Please be open with that and don't feel कि यार if I put it out there and it doesn't work out, the world's gonna laugh at me. Don't think like that. Think that I'm gonna put something out and world's gonna appreciate that I am the one who had the stamina of making it happen. So that would be number one thing. The second thing would be to never stop learning. I think that's very, very key. If you become very good at a particular something and you make the best out of it, that doesn't mean that should be it. You should keep learning, keep growing, keep exploring, and keeping yourself up to date with all that's happening around you in your own particular field, but other fields as well, especially when it comes to STEM. And I think the third thing that I would definitely recommend is we're in a world where we need to create more examples, more role models when it comes to women in leadership. So if you get that opportunity to be a women leader, identify other women leaders as well and bring them forward too. So don't only have the entire limelight or entire thing to yourself कि I'm creating the impact, but then inspire others, bring them to that position as well, so we could multiply ourselves. And हर कोई एक person can't reach and create impact everywhere, but if there are a lot of us, like 4 of us right now, we can keep on increasing the impact every day. So these would be like my 3 recommendations to everyone out there. Very nice message है अजीमा. So Zainab, आपका version बताइए. एक तो मैं एक फैक्ट अब मैं हर अपने सेशन में, पैनल में, सेमिनार में कहने लगी हूँ जो लड़कियों को समझने की जरूरत है. STEAM is a natural for women. Please go explore. It is a natural. जो STEAM से related चीजें हैं, analytics, multitasking, project management, critical thinking, problem solving, ये सब natural है. I'm not saying men के लिए नहीं है, but women के लिए natural है, क्योंकि हम घरों में यही कर रहे होते हैं. ठीक है, एक तो ये एक फैक्ट है जो मैं इसको एज एन एडवाइस कहें या एज अ ब्रेन ओपनर, एज अ थिंकिंग कंपस ओपन करना चाहती हूँ. थिंक ऑफ इट एज अ नेचुरल. 3 चीजें मैं डूज कहती हूँ और एक डोंट कहती हूँ. इसमें मैं कहती हूँ डोंट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग. Don't shy away from networking. Don't shy away from challenges. Don't shy away from solving new problems. Don't shy away from asking questions. Don't shy away from sounding stupid. Nothing is stupid. Like, don't shy away, because that's how our cultures are building us. And that's I think that's one thing that my
parents empowered me with. Don't shy away. Although I've been a very shy person, if somebody would know me in my school days, they would be very surprised, and they are. But then again, your parents and your mentors help you get out of that, because एक potential आप में है जो आपको use करना है. That's your responsibility. Hmm. तीन चीजें मैं कहती हूँ कि एक एक तो जो अजीमा ने कहा, कीप लर्निंग. टेक इज नॉट अ फील्ड. आज भी 25 साल बाद मैं और आप भी सीख ही रहे हैं. वी आई कैन नॉट से आई कैन स्टॉप टुडे. आज भी मैंने किसी से सुबह मीटिंग की है, मैंने कहा अब ये इसके आर्टिकल्स मुझे भेज दो, ये मैं किताब ढूंढ रही हूँ अमेजोन पे, किसी से मंगा रही हूँ. एंड दैट्स द जर्नी ऑफ टेक. दैट्स द जर्नी ऑफ कीप गोइंग, बिकॉज दैट्स इसी तरह से अजीमा भी कर रही होंगी और इसी तरह से समीना भी कर रही होंगी. दूसरी चीज, नेटवर्क एंड ग्रो. प्लीज 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 डोंट थिंक कि हम इंडिविजुअली लोगों से मिले बगैर ग्रो कर सकते हैं. जैसे अजीमा ने भी कहा, समीना भी, हम लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है और हम कैसे चीजों को आगे ले जा सकते हैं. हम उनसे डिस्कस करते हैं, कुछ सोल्यूशन वो देते हैं. हर एक बुरा नहीं है. हम सब इधर बैठे हुए, इसका मतलब है हर एक बुरा नहीं है ना. कोई तो हमें सपोर्ट कर रहा है. देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम. पीपल डू गेट अप. और दूसरा, मुझे कभी कभी रीड एम्पावरमेंट इन अ वेरी different way. I read it in a very different way. I read it in balancing life. I think लोगों के हुकूक देना, अपने फराइज पूरा करना, सब बैलेंस होता है. आप वो करेंगे ना तो आपका करियर खुद ब खुद फ्लरिश कर जाता है. उसकी मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट अगर आपने हुकूक और फराइज के बैलेंस में रखा ना अपने आप को. हम कभी कभी समझते हैं कि सिर्फ काम ही हमारा काम है. नहीं. हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे एक्सटेंडेड रिलेशंस, हमारा स्टाफ, हमारा सब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी हैव टू कीप आवर लाइव्स बैलेंस्ड, एंड देन आप ग्रो एंड फ्लरिश करते हैं. सिर्फ सिर्फ काम करने से आप ग्रो एंड फ्लरिश नहीं कर सकते. दिस इज माई पर्सनल बिलीफ इन दैट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. सो दिस इज माई 3 do's. Yeah. And don't में आपने कहा कि शाय ना करें. डोंट शाय अवे प्लीज. गर्ल्स के लिए तो सबसे ज्यादा ये मैसेज है, डोंट शाय अवे. Yeah, and मुझे उससे ख्याल आता है कि one thing that I practice in life, quite consciously, is basically, not to wear the gender hat. यस. उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आप खुद ही अपने आप को इतना ज़्यादा sensitive position करेंगे that you are, sensitive of sitting next to a man, you are sensitive in terms of talking to, conversing with a man, or you're basically sensitive working in a group which is more populated with male members. तो then obviously हम अपने लिए खुद कह रहे हैं कि जी हमारे barriers हैं, इससे आगे हम जा नहीं सकते, and we define ourselves within certain boundaries. तो अगर हमने ग्रो करना है और हम चाहते हैं कि लोग बेसिकली हमें एज एन इंडिविजुअल ले, नॉट एज अ वुमन or a different woman compared to others, we really want us to be seen without a gender lens as well. ठीक है, बिकॉज चाहे वो हमारी आम जिंदगी हो, आपने बिल्कुल सही कहा, एज वुमेन वी आर मल्टीटास्कर्स एंड वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, ये जो नेचुरल ट्रेट्स आपने इस टीम के बताया ना, ये हमारी एक बिहेवियर है, और वी आर ब्लेस्ड विद सच क्वालिटीज. अल्लाह ने हमें वो फीचर्स दिए हैं कि हमारे अंदर एक नेचुरल चीज़ है. आदमी बहुत कोशिश भी करे तो वो उस तरीके से मल्टीटास्क नहीं कर सकता जिस तरह से एक औरत कर लेती है. We are designed in such a way that we are capable of playing multiple roles in one specific hour. We wear a hat of a mother in that same hour while I'm using, doing this talk. I'm a professional. While I'm conversing with you, I am, thinking as a legislator as well, कि यार how I can connect more women, and facilitate as a politician to connect more women with you, with Samina, with Azima, so that we can multiply this force. It is not about earning. It is not about only basically to generate source of income. इट इज़ मोर अबाउट जिस तरह हमने कहा शुरू में कि पर्पस क्या है, हम क्यों कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए या इंक्लूसिविटी होनी चाहिए. उसका रीज़न यही है कि हमारे पास अल्लाह ने हमें बनाया ये इस तरीके से, और
फॉर्चुनेटली हम उस तरह के प्रोपोर्शन में आ चुके हैं अपने मुल्क में, जहाँ 49 वर्सेस 51% पॉपुलेशन का रेशो है। इट मीन्स हर चीज़ के अंदर जो है वो, अगर एक आदमी है तो ऑलमोस्ट एक औरत भी वहाँ पे मौजूद है। तो वो जो दूसरे जो व्यू है, जो जिस तरीके से देखने का एक विजन है औरत का, वो completely different है from a perspective the way men sees anything। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट ऑफ और वॉक ऑफ लाइफ के अंदर ये दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं वो मौजूद हों, तभी जाके एक बैलेंस सोसाइटी बन सकती है। तो इसलिए आई थिंक मेरे लिए अगर मैं सोचूं कि क्या एक चीज़ डोंट हो सकती है, तो मैं समीना की बात से रिलेट करूंगी कि आप बेसिकली जस्ट डू समथिंग दैट कन्विंस यू इंटरनली। इंट्यूशन होती है आपकी कि यार यही चीज़ है जो मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, एंड इट इज़ नॉट that once you decide it will stay there. It keeps evolving, it keeps coming to you कि अच्छा what next, what is something that I can do? And I can assure you that healthy dialogue with parents while you're making your career choices will always land up convincing them, and you will be able to convince them within the boundary of being remaining as an obedient child to them. And ultimately, they will basically be proud of you. Like my parents are proud of me as well. Like Samina's parents are proud of her as well. तो इसलिए एक healthy dialogue की ज़रूरत है। वो टू वे कम्युनिकेशन को खुला रहने देना चाहिए पेरेंट्स के साइड से भी, और क्योंकि हम वालदेन का रोल भी अदा करते हैं, तो हमें भी अपने बच्चों की चॉइसेस को थॉरली ओपन ईयर्स एंड ओपन ब्रेन्स के साथ सुनना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। इट वाज लवली लवली टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। आई रियली एंजॉयड हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एक फॉर्मल सेटअप के अंदर हम बात करें, बट इट्स आई होप our audiences will also basically get it's worthy of their time to basically listen to all three of you. Thank you very much. Thank you.